गुड इवनिंग जय जगन्नाथ समस्त को वेरी गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग। अच्छा समस्त जॉइन हो गले स्टार्ट करिए पे रिवीजन सेशन। देख जेमेति कि मु तुम को कही प्रीवियस रिवीजन सेशन जब देखि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक से बर्तमान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउ कैपेसिटेंस करबा। देख पे प्रथम रहा तुम शॉर्ट क्वेश्चंस ठीक अच्छे आमर पैटर्न तो तुम जानी ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन पड़ू एक मार्किया तापर रहा तुम दी मार्किया क्वेश्चन तापर रहा तुम तीन मार्किया क्वेश्चन तापर कौन रहा 5 मार्किया क्वेश्चन नुह कि जदि तुम केवल शॉर्ट क्वेश्चन आउ एक मार्क शॉर्ट क्वेश्चन आउ 5 मार्किया क्वेश्चन को मिसई दब ताले ये तुम 35 मार्क्स 35 मार्क्स जदि दी मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन को तुम मिसई देल ये तुम 35 मार्क्स ये अगेन होगा केते 35 मार्क्स ठीक अच्छे ये 35 ये 35 केमिति दी मार्किया क्वेश्चन तुम पड़ो 7टा 7 गुणे 14 तीन मार्किया क्वेश्चन भी तुम पड़ो 7टा ये 7 ये 7 7 गुणे आसीगला 14 7 इंटू 2 14 7 इंटू 3 21 ठीक अच्छे ये आसीगला तुम 14 मार्क ये आसीगला 21 14 21 केते गला 35 ये आसीगला 5 मार्किया 3टा एक मार्क आसीगला केते 20टा तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी अछि राइट तामने स्ट्रेटजी आसीला हमर एक मार्किया 20टा 5 मार्किया 3टा 3टा माने ये आसीगला केते 5 into 3 15 तो ये 15 ये 20 केते गला 35 ठीक आ तुमरो दी मार्क आसीला केतरा पिले 7टा 3 मार्क केतरा आसीला 7टा दी मार्क 7टा 3 मार्क 7टा जब जानी पड़ुथबो दी मार्क 7टा 3 मार्क 7टा केते आसीला ताले ये आसीगला 14 ये आसीगला 21 टोटल हेला केते 35 ठीक अछि डन तुम किंतु ऑप्शन दिया हितो पाखापाखि बोधे ये 12टा क्वेश्चन 12टा क्वेश्चन पड़ो 12 टू 7 7 तुम कर आ जो 5 मार्किया क्वेश्चन तुमको दिया हितो बोले 6टा एक मार्किया क्वेश्चन किसी ऑप्शन ना एक मार्किया क्वेश्चन जेहेतु एमसीक्यू ऑप्शन किसी ना तो मोर तुम मान ऑनेस्ट सजेशन यह रोचे पूरा ऑनेस्ट सजेशन तुम जिते पारुच वर्तमान यू टेक आइदर एनी सैंपल पेपर और जे कौन तुम नोट फॉलो कर बही फॉलो कर यू कैन रेफर एनी बुक आशा गुड इवनिंग राधे राधे यू कैन फॉलो एनी बुक सैंपल पेपर और नोट्स जो तुम शॉर्ट क्वेश्चन जिते मैक्सिमम हो पार प्रैक्टिस कर दरकार आमर तो शॉर्ट क्वेश्चन रिवीजन चलो रिवीजन सेशन ने जमी तुम ऑलरेडी कौट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रे ठीक से भाया ठीक हम ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो देख पे आग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दी मार्किया रहा दी मार्किया तापर आसीगला तुम दी मार्किया क्वेश्चन मु आग तुम मान फॉर्मूला डिस्कशन कर दूची तापर हम जा क्वेश्चन पार्ट को न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छी ए जो न्यूमेरिकल पोर्शन पर आसीगला तुम एटा एमसीक्यूज ओके एमसीक्यूज तापर तुम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टा तुम मैंने नोट रू प्रैक्टिस कर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टा कंप्लीटली तुम दायित्व तुम मैंने नोट रू प्रैक्टिस कर आमे जो एमसीक्यू अच्छी एमसीक्यू गुड़ा आमे डिस्कशन करिया ठीक अच्छे एमसीक्यू टा आमे डिस्कशन करिया बट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टा तुम मैंने प्रैक्टिस कर ठीक अच्छे ये आसीगला तुम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन
चलो ओ ठीक अच्छे स्टार्ट करिया हमें देखो पे ए क्वेश्चन तमर फास्ट अच्छे किंतु मु आगे तुम मान सहित शेयर करुच्ची फॉर्मूला तमें मैंने मो सहित फॉर्मूला लिखा स्टार्ट करो खाता पेन बाहर करो आगे फॉर्मूला लिख मो सहित बर्तमान लाइव क्लास रे फॉर्मूला लिख फॉर्मूला लिख आम जा न्यूमेरिकल सेक्शन पर देखो कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला मु लिखुची कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला चैप्टर टा कौन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस प्रथम आम आगे फॉर्मूला डिस्कशन करिया कार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कार पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ठीक अच्छे देख प्रथम आम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला डिस्कशन करिया चलो स्टार्ट करिया फर्स्ट फॉर्मूला आसला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रो कांसेप्ट कौन कहूची ना सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट वर्क डन बाय चार्ज दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला भी से VB माइनस VA इज इक्वल्स टू WAB डिवाइडेड बाय Q0 या अर्थ जदि दीटा पॉइंट अच्छे गोटे अच्छी ए पॉइंट गोटे अच्छी बी पॉइंट गोटे कौन अच्छी ए पॉइंट आ गोटे अच्छी कौन बी पॉइंट मते जदि पोटेंशियल डिफरेंस बाहर करियर अच्छी potential of B point minus potential of A point, then I should take a charge Q0 from A to B. Could go to A ru B को नेबी Q0 could go to नेबी A ru B को. I should take a charge Q0 from A to B. तापर लिखली फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल फाइनली से गला कोड को B पॉइंट तो B पॉइंट रो पोटेंशियल हैला VB माइनस इनिशियल थिला कोठी A पॉइंट रे माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट final potential minus initial potential equal to work done in taking the charge from A to B. Work done in taking the charge from A to B. Work done in taking the charge from A to B divided by magnitude of the charge Q0. Electric potential difference. बोला third point. अच्छा potential of a dipole electric potential of a dipole गोटे डाइपोल पई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केते कोन आसुची डाइपोल रो आमे जानि ऑलरेडी एक्सियल लाइन रे कोठी पिले एक्सियल लाइन पई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला कौन आसे VA इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon 0 P by R square isn't it एक्सियल लाइन फॉर्मूला कौन आसे VA इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 P by R square हालांकि इक्वेटोरियल लाइन रे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केते रुहे इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केते रुहे VE इक्वल्स टू 0 इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केते रुहे VE इज इक्वल्स टू 0 ओके लिखलो जीवा फोर्थ पॉइंट को आपको जीबे
मत कमेंट सेक्शन में जनाऊ लिखुच ना लिखुन आकाश टिंकू रमाकांत आशा कमेंट सेक्शन पे मत जनाऊ लिखुच ना लिखुन जनाऊ स्टे ट्यून्ड टिके धैर्य धर आमे धीरे धीरे जा बिल्कुल व्यस्त हुओनी फॉर्मूला तुमको शिखौची फॉर्मूला मन रही गला बहुत तक काम तुम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जना पड़ोनी लिखुच ना लिखुन मत कमेंट सेक्शन में लिखुच ना लिखुन जीवा बर्तमान आमे 4 नंबर फॉर्मूला आकाश तू लिखुनु कहीं बाबा आकाश व्हाट हैपेंड कहीं लिखुनु असुविधा कौन है लिखुची आशा लिखुची ठीक अच्छे सरीला सरीला अच्छा बाकी टिंकू रमाकांत मेसेज करो लिखुच ना नहीं तुम चला जीवा नेक्स्ट फॉर्मूला को रिलेशन बिटवीन इट इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन का भीतर रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड and potential gradient relation between electric field and potential gradient relation टा कौन आसे पहले relation टा आसे E vector is equals to minus of dv by dr into n cap ये हला तमरो relation between electric field and potential gradient or you can simply write E equals to minus of dv by dr ए जो dv by dr टा को कौन कह जाए पहले potential gradient या कोई कौन कह जाए potential gradient और एटा तला electric field important होची लिखो तो relation between electric field and potential gradient E equal to minus of dv by dr into n cap डन जीवा 5 नंबर फार्मूला को जीवा 5 नंबर फार्मूला आजकल तुम्हारा वर्तमान work done in rotating an electric dipole in uniform electric field फॉर्मूला कौन आसे यार तुम कह सर एटा तो पूरा गोटे हेडिंग ही गलानी बाबा हेडिंग टा मु इतपय देइची तुम जानि परिया दरकार जेडी w टा कौन फॉर्मूला से w इज इक्वल्स टू एक्चुअल जो फॉर्मूला से w इज इक्वल्स टू हमर एटा आछी कौन माइनस ऑफ p वेक्टर डॉट e वेक्टर बा माइनस ऑफ pe cos थीटा माइनस ऑफ pe cos थीटा ठीक अछि माइनस ऑफ pe cos थीटा ये वाला फॉर्मूला वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक अछि ये केते नंबर हेगला 5 नंबर फॉर्मूला केते नंबर एटा 5 नंबर ठीक अछि 6 नंबर फॉर्मूला 6 नंबर फॉर्मूला कोन आसेला एनर्जी stored within a system of 2-point charges energy stored within a system of 2-point charges energy stored
within a system of 2 point charges. से एनर्जी रो फॉर्मूला कोन आसे पले एटा एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी EP इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 into Q2 divided by R. Q1 into Q2 divided by R. ये वाला तुम्हारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लो ताले मु आज तुमनको केतरा फॉर्मूला सिखेली 6टा फॉर्मूला सिखेली केतरा 6टा केते जण 6टा फॉर्मूला कंप्लीट करि सलनी मो सहित देखि एपटे 3टा लेखाला एटी 3टा लेखाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सी वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डाइपोल तापर आसीगला ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तापर समर एनर्जी स्टोर्ड विदिन अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी याको कोन कह जाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दिस इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आकाश रो सरिला आशा रो सरिला रमाकांत रो सरिला बाकी टिंकू टिंकू सरला ना नहीं बाबा सइला जिबा क्वेश्चन पाकू चलो बर्तमान जिबा क्वेश्चन पाकू हां देखो ए रीजन इन इलेक्ट्रिक फील्ड देई बाबा भी देई पचारछि इलेक्ट्रिक फील्ड केते होबा x = 2 रे तो को भी देछि ई पचारछि आमे को फार्मूला पकेयाबे एठी फार्मूला कोन अप्लाई करिया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट रिलेशन ता कोन आसे E = माइनस ऑफ dv by dr एटी कोन लिखबी माइनस ऑफ dv by dx दिस इंप्लाइज E = माइनस ऑफ d by dx माइनस ऑफ d by dx ऑफ v केटा आसीगला 4x² v केटा आसीगला 4x² दिस इंप्लाइज E = बर्तमान याकू जदि मु डेरिवेटिव करबी एटा आसीबो माइनस ऑफ 8x आसीगला केते एटा हमरो माइनस ऑफ 8x केते आसीगला माइनस ऑफ 8x कोन पचरछि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x = 2 लोकेटेड इन द रीजन x = 2 रे ताले मु लिखली एट x = 2 at x = 2 comma E = केते आसीगला माइनस ऑफ 8 into 2 is equals to minus of 16 न्यूटन पर कूलम हालांकि जदि हम मैग्नीट्यूड नबा ताले एठो माइनस साइन ता रहइबो नाही एटा हिजो प्लस दिस इज द आंसर 2 मार्क गला 2 मार्क ठीक अछि आराम रे बर्तमान तुम बुझी जाओ आगे ए जो रिविजन वीडियोटा तुमर ये आप रे तो स्टोर ही रहइबो रिविजन वीडियोटा कोट रहबे पले हम आप रे ही तो रहइबो तेणु तुम बर्तमान बुझी बुझी चलो कहीं तुम जो लिखा बर्तमान टाइम नब ताले मते टिके प्रॉब्लम हबो आमे सारी परिबनी जति क्वेश्चंस अछि सो सेति पई कहूची वर्तमान सिचुएशन रे तुम माने गोटे काम करो बर्तमान खाली बुझी बुझी चलो पुणी वीडियोटा देखिबो लेखि लिखि तापर चलिबो मन करके ठकिबनी लेखि लिखि चलिबो जो पॉइंट रे बुझी न परिबो मते संगे संगे पचारिबो ठीक अछि द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट ए पॉइंट ड्यू टू ए 2 नानो कूलम चार्ज इज -2 न्यूटन पर कूलम कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज पिले कोन देई छी तमे गिवन डाटा बुझी परछो की जहा दिया हेछि तमे एटी गिवन डाटा टा बुझी पारुछो की गिवन कोन दिया हेछि गिवन कोन दिया हेछि गिवन दिया हेछि चार्ज गिवन कोन दिया हेछि पहिले चार्ज दिया हेछि केते दिया हेछि 2 नानो कूलम माने 2 * 10 टू द पावर केते आसी गला एटा -9 कूलम गला
आउ कोन दिया है द पोटेंशियल ग्रेडिएंट एट ए पॉइंट ता माने dv by dr या अर्थ dv पोटेंशियल ग्रेडिएंट माने dv by dr ता दिया है केते दिया है -2 न्यूटन पर कूलम। अच्छा ता माने इलेक्ट्रिक फील्ड हम पाई पिले इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसे माइनस ऑफ dv by dr ता माने इलेक्ट्रिक फील्ड मते इनडायरेक्टली दिया केते 2 नानो पर कूलम सॉरी 2 न्यूटन पर कूलम नानो पूछ ताल देखो मते दिया है इनडायरेक्टली कोन दिया है ना सर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है चार्ज दिया है पचार आर केते हो मु बर्तन डायरेक्ट फार्मूला पकेबी E इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्ट फार्मूला पकेबी 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by r square नो कि q divided by r square this implies ताले r square is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 into q by e बाबा सब तक तो गिवन अछि this implies r square is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 रो मूल्य केते आसे 9 into 10 to the power 9 9 into 10 to the power 9 into q केते आछि 2 नानो कूलम माने 2 into 10 to the power minus 9 2 into 10 to the minus 9 विभक्त e केते आछि e आछि 2 यारे सब तो कटि गला बोले देखे 10 to the power 9 10 to the power minus 9 कटिला 2 2 कटिला ताले r स्क्वायर टा केते रहला दिस इंप्लाइज r स्क्वायर टा केते आसी गला r स्क्वायर आसी गला 9 ता माने एठी r टा मोर केते आसी गला r आसी गला तमरो 3 मीटर r केते आसी गला 3 मीटर आंसर 2 मार्क देखो होउची ना होउनी को 2 मार्क के कोडी जदी बुझी न परिलो संगे संग इमीडिएट पचर दो q दिया है पिले आउ गिवन डाटा कोन दिया है पोटेंशियल ग्रेडिएंट माने पोटेंशियल केते चेंज होची केते डिस्टेंस रे dv by dr ता कोइ को जे पोटेंशियल ग्रेडिएंट dv by dr केते दिया है -2 इलेक्ट्रिक फील्ड कोन आसे नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडिएंट माइनस ऑफ dv by dr तो dv by dr जदी -2 माइनस dv by dr केते आसे 2 तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली गल चार्ज मिली गला r पचरिछ बाहर जीवो नेक्स्ट define equipotential surface mention the angle between the equipotential surface and the lines of force on this surface अच्छा equipotential surface कहा को जाए equipotential surface कहा को जाए the surface at which it is the surface at which कौन हुए it is the surface at which पोटेंशियल बा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of every point electric potential of every point is same एमिति गोटे सरफेस जो सरफेस रे सब पॉइंट रो पोटेंशियल समान थिबो ताकू पिले हम कोन कहू इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वी मानेला सेम पोटेंशियल जो जो जदी गोटे सरफेस रे पोटेंशियल सब पॉइंट रो समान थाए सब गोटे पॉइंट रो पोटेंशियल समान थिबो मानि न तमे एटा हला हमर बोर्ड रो जो सरफेस ता अछि ए बोर्ड रो सरफेस रे ए पॉइंट रो पोटेंशियल जदी अछि 10 वोल्ट तमे देखलो ए पॉइंट रो पोटेंशियल अछि 10 वोल्ट बोर्ड ऊपर तमे जत्तक पॉइंट नउचो जदी सब गोटे पॉइंट रो पोटेंशियल 10 वोल्ट हि थिबो ताले म कहबे बोर्ड ता हला गोटे इक्विपोटेंशियल सरफेस बोटा कोन गेला गोटे इक्विपोटेंशियल सरफेस तुम डेफिनेशन कोन ना द सरफेस एट व्हिच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एवरी पॉइंट इज सेम इज नोन एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस अब इक्विपोटेंशियल सरफेस ता इलेक्ट्रिक फील्ड को केते एंगल करे पिले 90 डिग्री और इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर इक्विपोटेंशियल सरफेस आ इलेक्ट्रिक फील्ड से सब बेले कोन करंती ना परस्पर को परपेंडिकुलर होंती एंगल करंती 90 डिग्री गला 2 मार्क जीवा नेक्स्ट आसीगला कैपेसिटर अच्छा बर्तमान टिके कैपेसिटर फार्मूला लिख दो आगे लेख मो सहित वर्तमान कैपेसिटर फार्मूला आगे लेख कैपेसिटर कैपेसिटर आगे फार्मूला लिख ठीक अछि देखो पहले फर्स्ट पॉइंट
फर्स्ट है कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस सी रो फॉर्मूला कौन आसे Q by V कैपेसिटेंस सी रो फॉर्मूला कौन आसे Q by V सेकंड फॉर्मूला आसला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेकंड फॉर्मूला कौन आसीगला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दी प्रकार फॉर्मूला आछी गोटे है विदाउट डाइलेक्ट्रिक गोटे कौन आछी विदाउट डाइलेक्ट्रिक ता माने दीटा प्लेट भितर डाइलेक्ट्रिक नथिबो विदाउट डाइलेक्ट्रिक जेतले दीटा प्लेट भितर डाइलेक्ट्रिक नथिबो सेते बेले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्मूला कौन आछे C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D एप्सिलॉन नॉट A बाय D ता माने एटा से एयर रीजन रे एटा को रीजन आसे बिले एयर रीजन रे ठीक अछि फॉर्मूला एतिक अछि ठीक अछि CA इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय बोला एयर रीजन रे अच्छा सेकंड आसे विथ डाइलेक्ट्रिक when a dielectric slab is placed when a dielectric slab is inserted जेतेबेले गोटे डाइलेक्ट्रिक स्लैब टे भर्ती करा हबो कोठी कैपेसिटर दीटा प्लेट मझिरे सेतेबेले कैपेसिटेंस रो फार्मूला आसे C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T प्लस T बाय K D माइनस T प्लस T बाय K ये आसेला कैपेसिटर रो फार्मूला व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड partially ओके अच्छा फार्मूला तो ये आसिला डायग्राम टा कहि दउ एटा रहला कैपेसिटर दीटा प्लेट ठीक अछि एठी डाइलेक्ट्रिक स्लैब टे भर्ती कराइ छथि ये वाला डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रो थिकनेस केते रहउची डाइलेक्ट्रिक स्लैब रो थिकनेस रहउची केते T दीटा कैपेसिटर प्लेट भितरे डिस्टेंस केते रहउची D तो D is the separation between plates of the dielectric T is thickness of the dielectric अच्छा थर्ड टा कोन आसला प्ले when dielectric is filled when dielectric is filled between the plates जेतेबेले डाइलेक्ट्रिक टा हमें पूरा पूरी दीटा प्लेट मझिरे भर्ती कर दबा सेतेबेले कैपेसिटेंस केते होबो व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ता माने पूरा जो डाइलेक्ट्रिक टा T थिकनेस रो थिला ताकू T को बढ़े की D सहित समान कर दबा सेतेबेले कैपेसिटेंस टा कोन आसीबो C इक्वल्स टू सेतेबेले एटा आसीबो K इनटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D अर्थात ये आसीबो K इनटू कैपेसिटेंस इन एयर रीजन जेतेबेले डाइलेक्ट्रिक स्लैब टा पूरा पूरी भर्ती कर दिया हबो सेतेबेले कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल्स टू K टाइम्स कैपेसिटेंस इन एयर रीजन जेति की हुए कैपेसिटेंस तारो K टाइम्स हिजबो कीप इट इन माइंड K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 K इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कथा कुआ होची डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रो जो मूल्यटा सेरा सब बेले आइदर एक ठू माने 1 ठू बड़ होबो नले 1 सहित समान होबो गला मात्र दीटा फार्मूला सिखिचो तापरे लेखा सलानी की फार्मूला मो सहित लेखो फार्मूला गुडा मु हेडिंग दे दे डाकी डाकी पढौची फार्मूला मो सहित ही लेखो डिले करनी
आ टिके स्पीड करो, टिके स्पीड अप करो। ठीक अच्छे, रफली लिख लिखि चालू थाओ, कहीं बर्तमान लेखु 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 तुम प्राक्टिस हो मन भी रही जे फॉर्मूला एमती आसे बोली। या पर 3 नंबर रे 3 नंबर आछी तुमर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट बीट आइड आसला सीरीज कॉम्बिनेशन पिले कोटा कांस्टेंट कोटा वैरी करे ना सीरीज कॉम्बिनेशन रे चार्ज टा कांस्टेंट क्यू टा कांस्टेंट सब गुडा कैपेसिटर रे समान अमाउंट रो चार्ज रहइबो वैरी करे कोटा पोटेंशियल डिफरेंस टा वैरी करे v टा चेंज हुए v टा हला वेरिएबल किए एठी v टा हला वेरिएबल। अच्छा फार्मूला कोन आसे ना 1/c s इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 लाइक दिस। चल ये ला सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन हुए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले कांस्टेंट कोटा हुए पैरेलल कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट कोटा हुए चेंज कोटा हुए पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुमरो चार्ज टा हुए वर्तमान वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस हुए कांस्टेंट तो मैं लिखली v हला कांस्टेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में v कांस्टेंट चार्ज डिफरेंट अमाउंट रो चार्ज स्टोर हुए डिफरेंट कैपेसिटर q टा हला एटी वेरिएबल q टा कोन आसी गला एटी वेरिएबल q टा हला वेरिएबल v टा गला कांस्टेंट। फॉर्मूला कोन आसी cp इज इक्वल्स टू डायरेक्ट एटी ऐड करा जाए c1 प्लस c2 लाइक दिस चल रहा। तो ये हेगला तुमरो कोन सीरीज कॉम्बिनेशन ये हेगला कोन पैरेलल कॉम्बिनेशन ये कोन हेगला पैरेलल कॉम्बिनेशन इजंट इट सीरीज पैरेलल। फोर्थ पॉइंट एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर लिखो तो मो सहित एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर रो फार्मूला कोन आसे पिले द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड E is equals to either it has half cv square or half q square by c or half q into v this is the formula of energy stored in a capacitor okay लिखो लिखी जाओ मात्र 4टा फॉर्मूला लिखी दियो। सरलाणी केतरा फॉर्मूला दिली मात्र 4टा केतरा दिली केवल 4टा जीवा क्वेश्चन पकु जीवा रमाकांत सरला आकाश सरिला ना सरलानी मो आशार सरिला आकाश रो सरिला रमाकांत टिंकू कोडे वाला जीवा क्वेश्चन पकु चलो
कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी देछि केते 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कैपेसिटी केते देछि प्ले 2 माइक्रोफैराड is charged to a potential of 6 volt calculate the energy stored in the capacitor चलो ए जो क्वेश्चन टा हमें करिया गिवन डाटा लिख दवा कोन लिख दवा आगे गिवन डाटा गिवन कौन कौन दिया मते मते दिया सी सी केते दिया सी दिया 2 माइक्रोफैराड सी केते दिया 2 माइक्रोफैराड आ गोटे मते कौन दिया मते दिया भी भी केते दिया 6 वोल्ट सी आ भी दिया कौन पचार पहले एनर्जी पचार कौन पचार एनर्जी पचार अच्छा ताले बर्तमान हम एनर्जी रो फार्मूला लगेले एनर्जी रो फार्मूला इन टर्म ऑफ सी एंड भी ये केते आसे हाफ सीवी स्क्वायर ताले एनर्जी केते आसे हाफ सी केते आसे 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रो माने 10 टू द पावर -6 v स्क्वायर 636 दुई दुई कटला दुई दुई कटि गला ताले ई केते आसे 36 into 10 to the power -6 जूल ता माने एनर्जी स्टोर टा केते आसे गला हमरो 36 माइक्रो जूल 10 to the power -6 माने हला माइक्रो आ यूनिट कोन आसे जूल ये हला एति गेला एनर्जी आंसर डन 2 मार्क हला 2 माइक्रोफैराड 6 वोल्ट हला कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बुझी होउची ना बुझी होनी को टू कैपेसिटर्स हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड when connected in parallel and 1.2 microfarad when connected in series calculate their capacitance given आगे लिख दबा प्रथम में कोन लिख दबा given से कहि छी दीटा कैपेसिटर अछि पैरेलल कॉम्बिनेशन रे तांकर जो कैपेसिटेंस स्ट्रक्चर आछि 5 माइक्रोफैराड पैरेलल कॉम्बिनेशन माने कोन दीटा डायरेक्ट ऐड करा हबो C1 plus C2 केते देछि 5 माइक्रोफैराड अच्छा सीरीज कॉम्बिनेशन रे से कहूचे जो कैपेसिटेंस आसुची सेटा केते आसुची 1.2 माइक्रोफैराड सीरीज कॉम्बिनेशन ये गला तमर पैरेलल पे ये गला कोत पे पैरेलल पे लेट्स गिव इट इक्वेशन अच्छा सीरीज कॉम्बिनेशन बर्तन देखो सीरीज कॉम्बिनेशन माने मु जदी दीटा को सीरीज कॉम्बिनेशन रे देखिबी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस केते आसीबो तो सीरीज कॉम्बिनेशन रे फार्मूला कोन आसे 1/cs इज इक्वल्स टू 1/c1 plus 1/c2 ऐड करले एलसीएम केते पड़ेबो c1 c2 ऊपर केते रहला c2 plus c1 माने मु c1 plus c2 लिख परबी ना नहीं 1/cs तले cs टा केते आजियो cs टा केते आजियो c1 into c2 by c1 plus c2 c1 into c2 by c1 plus c2 एटा देइछ सीरीज कॉम्बिनेशन रे वैल्यू टा देइछ केते देइछ पी सीरीज कॉम्बिनेशन में देइछि CS equals to or C1 into C2 divided by C1 plus C2 दिया हिच कितना एटा 1.2 माइक्रोफैराड 1.2 माइक्रोफैराड दिस implies ताले C1 C2 केते आसीबो C1 into C2 केते आसीबो पिले हमरो C1 into C2 आसी गला 1.2 into C1 plus C2 बाहर चल रेडी केते 5 ठीक अछि दिस implies तमरो C1 into C2 केते आसी गला 12 गुणन 5 गला तमरो 6 6 माइक्रोफैराड into माइक्रोफैराड रो स्क्वायर आछि माइक्रोफैराड रो स्क्वायर आछि एटा यूनिट C1 C2 मिल गला मते लेखो इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 रे मिलला मते C1 plus C2 इक्वेशन 2 रे मिलला C1 into C2 ताले C1 minus C2 मिल जिवो कोन करिया C1 minus C2 पे आंसर C1 minus C2 रो होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1 plus C2 रो होल स्क्वायर minus 4C1 C2 ये मैथमेटिक्स रे तुम फार्मूला पढिचो ताले C1 minus C2 रो होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1 plus C2 केते आछि 5 रो स्क्वायर गेला केते 25 माइनस C1 C2 आछि 6 6 गेला केते 24 25 रु 24 गला 1 ताले C1 minus C2
रो होल स्क्वायर ए के माने C1 माइनस C2 केते आसीगला 1 माइक्रोफैराड। ये आसीगला इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 टा आस्थिला हमर C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 5 माइक्रोफैराड। वर्तमान तुम दीटा को सॉल्व करो, जस्ट खाली ऐड करो। ऐड कले देखो माइनस C2 प्लस C2 कटि गला रहिला केते 2C1 इज इक्वल्स टू 5 एक आसीगला 6 माइक्रोफैराड। 2C1 एतिकी दिस इंप्लाइज C1 टा तले केते आसीगला 6 बाय 2 आसीगला तमरो 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड ये आसीगला C1। जदि C1 मिल गला तले मते C2 मिल जिवो और नहीं अतएव C2 इज इक्वल्स टू 5 माइनस C1 ताले एटा केते आसीगला 5 रु 3 गला आसीगला एटा 2 माइक्रोफैराड। ठीक अछि अतएव C1 टा हेगला तमरो केते 3 माइक्रोफैराड C2 टा केते हेगला 2 माइक्रोफैराड। डरिवार किछ नै जदि एभले क्वेश्चन पडिथो ये हेगला तमरो 3 मार्क रो क्वेश्चन। एटा केते मार्क रो क्वेश्चन 3 मार्क डन। ये हेगला तमरो 3 मार्क रो क्वेश्चन। ठीक अछि आशा कोटा तू बुझी पालुन को कोटा बुझी पालुन ए जो क्वेश्चन टा ना ए जो क्वेश्चन टा एटा तो सहज अछि हाफ CV स्क्वायर एटा सहज अछि ना ए क्वेश्चन टा एटा रिसेंट जोटा कली पैरेलल प्लेट रो सॉरी तमर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन नो देइछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के देइछ बोले 5 माइक्रोफैराड देइछ कहारो पैरेलल कॉम्बिनेशन नो 5 माइक्रोफैराड सीरीज कॉम्बिनेशन भी देइछ के देइछ 1.2 माइक्रोफैराड। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कोन करू 1 by C1 plus 1 by C2 ताको करके सॉल्व करले C1 plus C2 by C1 into C2 आसी 1 by CS ता तो CS ता केते आसबो C1 C2 by C1 plus C2 तोडा दिया हिच केते दिया हिच 1.2 लेखिली मु सेठी C1 plus C2 तो हम ऑलरेडी जानि छे केते तो C1 plus C2 1.2 रे मल्टीप्लाई कर दिले आसीगला C1 C2 C1 C2 को मल्टीप्लाई करला माने आंसर तो आछी एक्चुअली तो खाली 6 ही लेख यूनिट लिखिया दरकार नै माइक्रोफैराड रो स्क्वायर यूनिट लिखिया दरकार नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन टा माने एटा सी देला भी देला ई पचरला एनर्जी पचारि तो एनर्जी रो फार्मूला कोन आसे इन टर्म ऑफ सी एंड बी हाफ सीबी स्क्वायर आसे हाफ रहिला सी रो वैल्यू पुट करली v रो स्क्वायर करली आसिला आंसर। तो एटा तो सीधा पुट द फार्मूला गेट द आंसर एतरे किछ नाही हाफ सीबी स्क्वायर। तो तू बुझी पलुन को 2 माइक्रोफैराड रे माइक्रो माने 10 टू द पावर -6 ता माने एटा लेखा हवा कथा एक्चुअली 2 into 10 टू द पावर -6 फैराड जोटा एटे डायरेक्ट पुट कराइछ ए सी रो वैल्यू डायरेक्ट केते पुट कराइछ 2 into 10 to the power -6 डायरेक्ट पुट कराइछ सेटा माइक्रो मानेला 10 to the power -6 मल्टीप्लाई हबो। ठीक अछि को आसा बुझिला ना बुझिला को एटा पिला माने बुझी पालो ना बुझी पालो को हां C1 - C2 बाहर कले तापर C1 - C2 C1 + C2 को सॉल्व कले C1 बाहर लागे C1 बाहर गला पर जे कोन सोटे इक्वेशन पके देला माने कोन बाहर जिवो C2 बाहर जिवो मो एटी पकेली ए इक्वेशन पकेली C2 बाहर गला एटा थला इक्वेशन 1 जोटा गिवन डाटा रो आनिछु मो एटा थला इक्वेशन 1 डन चला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन टा पहले देइछ से बळ्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देइछ v in term of x देइछ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 102 तो तमे इलेक्ट्रिक फील्ड पई सीधा कोन करिवो डायरेक्ट बर्तन जदि मु फार्मूला पुट करबी सीधा एकत्र लिखली E equals to minus of dv by dx minus of dv by dx this implies E equals to minus of d by dx of v केते आछी 4x स्क्वायर अरे क्वेश्चन नंबर करा सरछु 4x स्क्वायर तो E इक्वल टू केते आसीगला minus of 8x बर्तन खाली x जगह पका 1 x जगह पकेले 1 केते आसीगला एटा E equals to minus of 8 न्यूटन पर कूलम ए क्वेश्चन करा सरछ प्रथम जो क्वेश्चन टा कहले से बळिया केवल एठी x अछि तनो x कोऑर्डिनेट पडिबो y आउ z पडिबो नाही 0 पडिबो नि कि 2 पडिबो इलेक्ट्रिक फील्ड पचरिछ
तो x कोऑर्डिनेट रे इलेक्ट्रिक फील्ड आसला केते -8 तो x जगह 1 पका छाड़ो so that the electric field at any point is equal to negative of the potential gradient at that point देखो पहले ए जो जिंसटा ये हला तमरो डेरिवेशन पार्ट कार कर डेरिवेशन एक्चुअली क्वेश्चन टा कोन पचारि so that the electric field at any point is equal to negative of the potential gradient at that point. This is a 3-mark question. This is a 3-mark question. It actually would a 3-mark question. This is a 3-mark question. से कहूँ derive the relationship between electric field and potential gradient. तो आमे कौन करिया बर्तन आमे नहीं जावा गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन आमे कौन करिया गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन रे नहीं जावा इलेक्ट्रिक फील्ड पटे ठीक अछि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन नहीं जावा बर्तमान देखो according to the concept of potential difference a charge must be taken from one point to another against the electric field ता माने बर्तमान मु दुटा पॉइंट चूज कली ये हला गोटे पॉइंट ए ये हला गोटे पॉइंट बी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रो कांसेप्ट अनुसार मु चार्ज टा नेबी इलेक्ट्रिक फील्ड रो अपोजिट डायरेक्शन ने माने ए रु बी आड को नेली चार्ज q0 को ठीक अछि ए रु बी आड को नेली वर्तमान देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कोडे आछी लेफ्ट टू राइट मु ताको डिस्प्लेस करेली कोडे राइट टू लेफ्ट सो the amount of work done can be written as the small amount of work done due to this small displacement can be written as dw is equals to let ए जो ए रु बी को डिस्प्लेसमेंट ता बहुत छोट होउची लेट दैट डिस्प्लेसमेंट बी dr तो मु लिखि परि वर्तमान dw is equals to f vector dot dr vector yes or no f vector dot dr vector isn't it and here what happens dw is equals to f टा केते जाव हमर q into e बा q0 into e vector because e equal to f by q ताले f equal to q into e तो q0 into e dot लेखली कोन dr vector isn't it तो q0 टा तुम एपटे डिवाइड कर दियो q0 टा तुम एपटे डिवाइड कर दियो dw by q0 is equals to केते आसीगला पिले हमर e vector dot dr vector बस amount of work done by charge is potential difference तो dw by q0 is dv तो this implies ताले dv टा केते आसीगला हमर dv टा आसीगला e into dr into cos 180 काहे कि 180 because electric field left to right displace करा होची right to left according to the concept of potential difference आमे ताको इलेक्ट्रिक फील्ड रो अगेंस्ट मूव करबा काको टेस्ट चार्ज को कल देखो पहिले this implies मु लिखि परि वर्तमान ताले this implies we can write dv is equals to minus of edr dv equal to केते आसीला minus of edr or now we can write e equals to minus of dv by dr eb equal to minus of dv by dr so this is the relationship between electric field and potential gradient we can write electric field is the negative of potential gradient आमे कोन लिख परिबा electric field is the negative of potential gradient पिले देखो मु एटी कोन करछि ना डायरेक्ट डेरिवेशन टे करछि सेंटेंस किछ नै वर्ड फॉर्मेशन किछ नै किछ भी लिखा हैनी किंतु जेहेतु एटा गोटे 3 मार्किया क्वेश्चन तनो तमो रिस्पांसिबिलिटी हला तमे नोट रु सैंपल पेपर रु बही रु जोट भी देखि कि आकु तो डेरिवेशन टा बुझी गलो प्रॉपर वे रे लिखिबा दरकार डायग्राम से करिवो डेरिवेशन होय तो तमे या करिवो किंतु ताको प्रॉपर वे रे लिखिबा दरकार लेट अस कंसीडर a charge q0 which is placed at point a and it is moved against the electric field to point b through a displacement of dr तमे सेंटेंस सा फॉर्मेशन करके लिखिबो जरा नोट रे तुमरो लिखा हितबो तापर ए सिंपल डेरिवेशन जोटा मु करली वर्तमान तमे ए डेरिवेशन टा कर देले माने सीधा आंसर पाखरे पहुंच जिवो आ आंसर टा कोन आसीगला इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट गॉट इट ठीक अछि पले नेक्स्ट से बळे क्वेश्चन दिया से बळे क्वेश्चन दिया तनो पिले हमरो ये हला 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन एटा गोटे 3 मार्किया डायरेक्ट क्वेश्चन ता तुमको दिया है डेरिवेशन तुम नोट रे अछि
एटा कहार डेरिवेशन कहलो देखि बिल्कुल किछि इनडायरेक्ट लेखा ही नहीं इनडायरेक्ट तुम कोठी पाइबो केमिस्ट्री पाइबो हमर सर थिले बोल कहि देली derive an expression for the potential energy of a dipole in a uniform electric field discuss the conditions of stable and unstable equilibrium पूरा बढ़िया से बुझा आइछि आयर डेरिवेशन भी करा आइछि फार्मूला कोन आस्थला potential energy of a dipole माने the amount of work done in rotating a dipole in uniform electric field जोटा बाहरी थिला w रो फार्मूला से w टा ही गेला potential energy of a dipole w रो फार्मूला कोन बारतला तमर माइनस ऑफ p डॉट e बा माइनस ऑफ p e cos थीटा बस यार डेरिवेशन टा तुमको पहिले करियर अछि माइनस ऑफ p e cos थीटा टाइम हे गेलानी आज जेहेतु आज टाइम हे गलानी तेणु आमे नेक्स्ट क्लास रे सोमवार दिन या ऊपर चर्चा करिया हला सोमवार दिन पुणी थे या ऊपर चर्चा करिया आज जति की पढ़ेली रिकॉल सब करिक आस्थियो मेनली फार्मूला रिकॉल करथियो कांसेप्ट रिकॉल करके पढ़ी के आस्थियो सो दैट मु रिवीजन करूथिबे तुम माइंड रे स्ट्राइक करिया दरकार जे हां या हमर पढ़ाई थिला सर या कहउछंती बुझी परछनी ठीक अछि चलो पिले तले आज पय एति की पुणी देखाबा हमें आगामी अध्याय रहिल।